जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। आज 15 अगस्त है, यानी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस भारतीय इतिहास का एक स्वर्णोज्वल दिवस, एक स्वर्णिम पन्ना। और आज ही के दिन शताब्दियों की पराधीनता की लौ श्रृंखलाएं टूटी थी। हमारा राष्ट्रीय पर्व, हर एक भारतीय का पर्व। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अपने अलौकिक साहस से स्वतंत्रता संघर्ष की ज्वाला को प्रज्वलित किया। ऐसे में आज उन्हें हम याद करते हैं, और याद करना हमारा प्रथम और परम कर्तव्य बन जाता है। हम उन्हें सच्चे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं, और यह हमारा कर्तव्य है। उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि सहस्त्रों के खून से शोणित से सृजित है हमारा स्वाधीनता का इतिहास। आज इसी पुनीत अवसर पर मेरी कक्षा नवम N के छात्रों ने इन महान क्रांतिकारियों, इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आभार व्यक्त किया है, उन्हें श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है, उनके चरणार बिंदों को शत शत नमन करने की कोशिश की है। एक छोटी सी श्रद्धांजलि बच्चों के द्वारा आपके समक्ष आज हम रखेंगे। तो आइए हम, यानी मैं और आप सभी, संकल्प लें कि स्वाधीनता के स्वाभिमान का संरक्षण हम पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की कविता के साथ मैं पूरे देशवासियों और विशेषकर अपने बच्चों, यानी कि मेरे विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य ढाल सी, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य ढाल सी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आप सभी को निखिल जॉन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
Today, we the students of Standard 9N present a small video on the eve of 73rd Independence Day. So let's just roll into the time when we used to recite this national pledge, which symbolizes fraternity. Hope you are going to like it. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I always strive to be a loyal and worthy citizen of it. To my country and my people, I pledge my devotion. May God grant her peace and prosperity. Freedom, a precious gift of God, right? 15th August 1947. On this day, India started a new chapter in its history. An era full of freedom, struggles and progress. But this was only possible due to the sacrifices made by countless freedom fighters. So, on this day, let us pay our homage to each sung and unsung heroes who made it possible. So with freedom in mind, faith in our heart, memories in our souls, let's just salute the whole nation on this 73rd Independence Day. Songs have always played an undisputed role in inciting the spirit of nationalism in hearts of millions of Indians. The patriotic songs not only instill patriotism in us but also propel us to do something spectacular for our nation. So here is a song of Lata Mangeshkar ma'am and Mere Watan Ke Logo. I am sure you are going to like it. खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। Freedom fighters fought for the freedom of our country. Due to these countless freedom fighters only, we are celebrating Independence Day today. There are countless freedom fighters who fought for their motherland, but let us know few of the freedom fighters who inspired the people to work for their country. India is calling. Blood is calling to blood. Get up, we have no time to lose. Take up your arms, we shall carve our way through the enemy's ranks. Or, if God wills, we shall die a martyr's death, and in our last sleep, we shall kiss the road that will bring our army to Delhi. Revolution. It does not need necessarily involve sanitary strife, nor is there any place in it for individual. It is not the cult of the pistol or the bomb. By revolution, we mean
the present order of the things, that is, manifest injustice, that must change. Jai Hind, Jai Bharat. To India by Sarojini Naidu. Oh young, through all thy immemorial years, rise, mother, rise, regenerate from thy gloom, and like a bride, high mated with the spurs, beget new glories from thine ageless womb. The nations that in fettered darkness live, crave thee to lead them where great mornings break. Mother, oh mother, wherefore dost thou sleep? Arise and answer for thy children's sake. Thy future calls with a manifold sound to crescent, honors, splendors, victories vast. Waken, O slumbering mother, and be crowned, who once wert impressed of the sovereign past. Just doing better from you. Beat your own records every day, because success is a fight between you and yourself. I will give you a talisman whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you. Apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melting away. We got independence on 15th August 1947. That's how we all start, right? Well, that's not true. It must be sounding silly, but we got independence 163 years ago when we first spoke up for our rights, when we demanded our freedom. And then the struggle started. It wasn't a very easy task for us to achieve it. It took a lot of lives and a lot of souls. You never know how many people are indulged in saving your life, either on the border or in the hospitals. While you are sitting in the coziness of your houses, some marchers are continuously being wrapped in tirangas and are honored for their bravery. So to say, it's not only on 15th August, rather daily. Lastly, I conclude that India is India because of the warriors who fought and are fighting. Happy 73rd Independence Day. Jai Hind. In this valiant battle for the country's future, Corona warriors are at the forefront. We pour our heart's gratitude and thankfulness before all the soldiers, doctors, nurses, teachers, sanitation staff, government employees, laborers, social workers, health workers, and all the other Corona warriors. You all have tirelessly displayed an unshakable faith and conviction that this pandemic can be defeated and India and humanity will ultimately triumph. Happy 73rd Independence Day. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forwarded by the into ever-widening thought and action into that heaven of freedom. My Father, let my country